Good afternoon, everyone. Hi, मैं तन्वी तपाडिया and this is just a small reminder. हम कल रात को 9:30 बजे Zoom पे मिलने वाले हैं. So just to brief you about it, मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगी. जो मैंने लाइफ में देखा है, फेस किया है, उसमें आगे बढ़ी हूँ और क्या उससे सीखा, कैसे लड़ी और क्या करने जा रही हूँ. Basically just sharing my entire life story with you. And मैं ये first time करने वाली हूँ with all of you. And I'm really looking forward to it. I hope आप सब मिलेंगे मुझे 9:30 बजे कल. Thank you so much. ओके तो ये सेशन कैसे प्लान हुआ वो बता दो. पीके मेहता का एनिवर्सरी था. पीके मेहता ने मेरे को और तापड़े जी को, हम 6 लोग, 3 कपल, हम लोग डिनर के लिए गए कोरेगांव पार्क में. डिनर करते करते हाफ वे पीके मेहता ने बोला तन्वी को बुलाते करके. तन्वी के पास में रहती, तो तन्वी को वहां पे बुलाया. और ऐसी टॉपिक चल रहा था तन्वी क्या कि तन्वी तूने ये किया वो किया, सब बातचीत चल रही थी. तो आई जस्ट पुट फॉरवर्ड टू तन्वी, तन्वी मुझे तेरा सेशन चाहिए मेरे क्लब के मेंबर्स. तन्वी मुझे बोली यार अंकल मैं तो 4-5 लोगों के सामने भी नहीं बोलूंगी. बोलती मैं मतलब मेरे को नहीं मालूम तेरे को क्या तेरा लाइफ जर्नी के बारे में बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, इससे ज्यादा क्या है. तो कोई नया टॉपिक तो ही दिया हमने कि टॉपिक लर्न करना है कि बोलना है. तो मैंने ठीक है तू डिसाइड कर. उस दिन हम लोगों ने 20 मई का डेट फिक्स कर दिया था. 20 मई को तन्वी का सेशन था. फिर आई टोल्ड तापड़े जी कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, उसको कुछ फोर्स नहीं करोगे, हाँ ना कुछ नहीं बोलोगे. और मैंने भी 5 दिन तक उसको फोन नहीं किया. बट वन फाइन डे उसने मेरे को मैसेज किया कि योगेश अंकल मुझे ये सेशन करना है, ये मेरा ये जो फियर है मुझे इससे भी बाहर आना है और मुझे ये सेशन करना है. तो दैट डे वी डिसाइड कि हाँ ये सेशन होने वाला है. फिर अब सेशन करना है ये तो चल रहा था कि कैसे करना क्या करना. अब टेक्नोलॉजी का एक बंदा शिरीष, 3 दिन पहले उसको फोन किया कि शिरीष भाई ऐसा ऐसा है, आपकी जरूरत है. तो लास्ट 3 दिन से फिर शिरीष भाई लग गए उसके साथ में. एंड देन फिर शिरीष भाई का सपोर्ट आया और ये सेशन तैयार हो गया. सो लेट्स हियर आगे क्या है वो सब पता चलेगा. सो शुड वी स्टार्ट नाउ? ऑलमोस्ट इट्स 9:32. So good evening to one and all. I welcome my Ganeshkhind family members and all our invited guests from district and friends for today's one of its kind session. From the start of our dynastic years, we have tried to give different kinds of meetings, different venues, different concepts meeting, and members involved meetings. Today's meeting was not planned at all, but was given just 10 days before when I met Tanvi. And I think this is first time in a club history that we are hosting such session where our Ganeshkhind family member, अपना ही घर का एक मेंबर, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सेशन ले रहा है. और वो शायद नहीं, आई एम 100% कंफर्म कि वो सेशन हम सबको मोटिवेट करेगा. और जो भी पर्सन ये सेशन अटेंड कर रहा है वो तन्वी को जानता है नहीं जानता है वॉट एवर इट मे बी, लेकिन वो ये सेशन के बाद फुल्ली मोटिवेट होगा और मुझे ये सेशन करने के लिए बधाइयाँ मिलेगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम I invite Shirish Kulkarni to just tell about Tanvi, what she is and what she is going to do. एब्सोल्युटली ये तो बहुत बड़ा प्लेजर है, ग्रेटिट्यूड है कि ऐसे कुछ नए चीजों के बारे में योगेश भाई जैसा प्रेसिडेंट, फ्रेंड, फिलोसोफर साथ में हो. एंड इट इज ग्रेट ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. सो टुडे इट्स all about Tanvi's achievements, where she is talking about what one can achieve, one can really do. And she will talk about her theme and tagline, One Life. Just to introduce her, Tanvi is a jewelry designer. Tanvi is a dancer. Tanvi is a model. She is a product photographer. And she has made all of these things in the life after certain things that she will talk more about. She is a pole dancer. She is a powerlifting champion. Went from all courses from the grassroots level to learn it
really hard to really make it to nationals. Tanvi is a K11 nutrition advisor. She's an Italian language speaker. She's a blog writer. And as you will hear her more and more, you'll find that you're finding some portion of yourself resonating with her. And you also will generate that fighting spirit that you need to have to overcome any kind of challenge or opportunity to really face your life. So she is non-conformist. She asks a question, why? Why not me? She is a stereotype breaker. Go with her. I will not let myself in between you and her. It's all over, Tanvi. Let's welcome Tanvi to this forum and let us hear her talk her mind. Over to you, Tanvi. Yeah, I think there is no question in between. Yeah. So the format is that she is going to have her journey getting told by herself. We will have some slides going along that will happen for around 35-40 minutes. And there'll be a question answer series session after that. Within that, I believe that everybody is going to get just hooked onto it, just mesmerized with what experience that she is narrating, with the visuals that you will see along, and the kind of way that she will bring pictures from her life in front of you. So, Tanvi, over to you. Our stage is all yours. Good evening, lines and liners. A very warm welcome to all of you. Hope you all are well, and it's been a great Thursday so far. Hi, I'm Tanvi Tapadia. Credentials aside, I think I would like to begin by saying a first-time speaker. You may see me read, you may see me getting stuck, stammer, or forget, or force to think. But the idea is to deliver. So before I begin about my journey, I would like to rewind to the evening Karuna auntie and PK uncle invited me to their anniversary dinner. That carb-free, exhausted thing, but Mama Papa also insisted, "Thodi der aa jao." It is during the interactions, Yogesh uncle and Swati auntie presented me with an opportunity of a lifetime. I'd say lifetime because 3 is a crowd for me. And public speaking happens to be one of my greatest fears. So when I learned, I signed up to address a dignified crowd of so many. So my anxiety level was through the roof. Yeah. That too, the idea of delivering a speech to folks I have grown up watching and listening to in itself is a defining moment. And now, powered by Shirish uncle with all the hands-on technical assistance, you know all the partners responsible, all the partners in crime responsible for it. Jokes apart, I am really grateful to all of them for this inspiring push. Tanvi, everything right happens for you is yours. Anything going wrong is ours. So go for it. All in Hindi. There's a request from people that more in Hindi. Right. That's right. Good. So I'd like to begin by captioning one line. Live it large, live it adventurously. But most importantly, live to tell the tale. This stems from every single fear either I was forced to overcome or overcame willingly. It has repeatedly required me to step out of my comfort zone, learn, relearn, unlearn, build and rebuild as many times as it takes. To think of it, how far off a thought from when we were actually born, even further away from schooling. Growing up, my parents and even I thought school would train me for life. I was a super naughty kid. I still am. कभी भी किसी की नहीं सुनती थी, अभी सुनती सबकी हूँ पर करती हूँ खुद की. Slightly different approach. So I had a very harmless opinion कि rules schools तक के ठीक है. What beyond? Poor parents of mine, before they knew, they were already dealing with a love-struck teenager. आप सब ने कैलाश खेर का तो सॉन्ग सुना ही होगा जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं. लाख लगा लो पहरे, रखते रब खोले. After 8 years of a tough fight, trying to convince my family to let me marry the man of my choice, everyone knows what happened.
a fairy tale wedding followed by a dramatic divorce. Today, I can laugh at it. But 3 साल पहले मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि अपने संगीत के सॉन्ग सुनूं भी. I just couldn't. एक टाइम था, back in 2009, the year I had gone to Milan. It was one of the toughest times back then, and I thought वो experience ही कुछ इतना profound था कि life में सब कुछ सीख गई. Right? Wrong. Little did I know, 2018 to 2021 was going to be the ultimate game changer and a life transformer for me. And in 2022, that very foundation would be tested again. I call them unit tests. हिम्मत ही नहीं होती इसको final exam बोलने की. I'd rather call it a unit test because I don't know what other curveball the life will throw at me. But you see, when the life I had lived for 18 years came to a screeching halt overnight, the unit test, as I call it now, was time that final exam ban chuki thi. I saw myself failing in every subject, on every front, and hence a failure in my mind. Gradually, my mental condition worsened and fatal conditions kicked in. I could take it no more. And before I knew it, I was standing on the terrace contemplating my suicidal jump. The businesswoman I was, the ambitious outlook I had, the dreams I lived, the goals I set, the creative life I experienced, and the fighting spirit I had. Suddenly, nothing and no one mattered. The feelings of self-pity, anger, frustration towards myself and others, shame for having led my family into it, the social stigma, memories of the person I was with, I struggled to be with, and the separation. The realization of having lost time and having no identity, all too irreplaceable and impossible to continue experiencing. मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक नेगेटिव इमोशन छूटा नहीं था एक्सपीरियंस करने. और आपको बता दूं, mental pain scientifically is proven is as good as a physical pain basically. पेट में गोले आना, गले में जैसे पत्थर होना. The whole time I just wanted to cry. Falling apart felt like death, and so I just wanted to die. And I was convinced this is the only way to go. So, जब 1% की अक्ल आई कि मुझे जीना है, too late. By then, I had trained my mind so well to perform the task that not executing it felt like hell every single day. मैं अपने आप से actually डर रही थी. But there's something I'd like to point out. Mind is a very dangerous weapon, and we humans are so destructive. मर जाएंगे लेकिन change नहीं होंगे. It's amazing. Anyhow, that split-second trigger when I was going to jump from the terrace, पत्ती चमकी, I stepped back. Self-talk तो कर दिया था, but अब terrace से नीचे भी तो उतरना था. Days turned into weeks and months. अंदर से आवाज आती है, Babe, where are you at? फिर एक और आवाज आई, terrace के बस एक level नीचे. That is in my bedroom, not too far away from the terrace, not too far away from still giving up on myself. The battle was on. The battle was to leave the bed. Fast forwarding, हम psychiatrist के क्लिनिक में थे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ. पापा asked, क्या इसे मेडिसिन की जरूरत है? एंड क्या गारंटी ये क्विट कर सकेगी? To which he replied, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, आप उनको बोलेंगे नहीं बैठ के मेडिटेट कीजिए. You will rush that person to the hospital ताकि वो जिंदा रहे. इस केस में जब तक कि वो अपनी जान नहीं ले लेती, आपको दिखेगा नहीं कि this is what she is going through. That is what it is. Coming to the second part, he said कि मेरे पास 35 साल से पेशेंट्स आ रहे हैं to live off the prescription. I can't do anything but prescribe.
आगे का बैटल जो है वो उनका खुद का है. It is a battle of their test of their willpower. So it is what she does out of her life, what she makes of her life here on. It's on her. In short, दोनों तरफ खाई. तो मम्मा पापा तो डर ही गए थे. People like करे तो क्या करें? क्या डिसाइड किया जाए? So when my weaning of progress started within a year, it was a good sign. और आज के तारीख में अब सब बंद है. Touch wood. But life had to be more than just running from one doctor to the other. You see, जिंदा रहने के लिए हम कुछ भी superficially, artificially कर लेते हैं. But it takes you to look deep within you. But I guess there were so many medical conditions, one after the other. I was just distracted and all over. I was battling chronic insomnia, requiring 10 mg plus medication. उससे भी नींद नहीं आ रही थी. Acid reflux, 4 महीने, I couldn't even go horizontally on the bed. रात को. Back issues, PCOD, वैसे ही हालत खराब थी. It went through the roof. Kidneys were blown away almost thrice. And pre-diabetic medications to start moving to people. Painful body twitches, life का हिस्सा बन गए थे. Like I remember, there was one time I was sitting at the airport, and मेरा muscle इधर से इधर तक fluctuate हुआ. Basically, my nervous system was not under my control. I was alive, looking at myself falling apart. जैसे कि ये काफी नहीं था, I had knee injuries and surgeries. So back to back, it was so much. How would I overcome? But I had to. So I gave myself no choice. जहाँ चलने भी नहीं आ रहा था, I decided I wanted to jump, and I wanted to jump higher and jump back to my life. From 2 steps to 3 to 4 to 5. There was no stopping. I just had to keep pushing my mind further ahead. So, I mean, I tried, उस दौरान I tried a lot of different things. फिटनेस एक था, एक टाइम था मैं खुद को मिरर में देख नहीं पा रही थी. फिर कहीं इंटरनेट पे I read, if you want to change your life, change your hairstyle. And then there was no looking back. Like, I went crazy with my hairstyle. I went drastic with hair color, and before I knew it, I had a hair tattoo and hair color, and I walked home. And I to the office. So it was like crazy, but I just kept at it. Very soon, I did a photo shoot in the same hairstyle and in a lehenga. But, you know, a sadharan lehenga nahi tha. This was my wedding lehenga. I wanted to overcome the fear of weddings and that whole discomfort I had, this whole trauma I felt, and the shoot did it for me. I went all out in terms of expression. I colored my hair blue. I did blue lips in a shoot. I did distressed bride to unconventional bride to very soon. I was becoming fitter and fitter, so I started towards fitness. I just turned towards fitness shoots. So it was really like some sort of an expressive journey. While at it, I read another quote: travel because money will return, not time. So उस दौरान I did छोटे मोटे ट्रिप्स में पैसा ना गवा के I saved up for 2 very transformational trips of my life. I wanted to travel far. I wanted to travel wide. Far and wide, mentally and physically. You see, travel is not just about buying a ticket and boarding that flight or just reaching that destination. Starts before, ends before. Started with Kedarnath trek. That required some mental toughness. I was to go with a friend and friend backed out last minute. And it was just really scary. I was not just going to be braving harsh conditions, weather-wise, but also physically and mentally. I was flying solo. It was mind-numbing, a mind-blowing experience. I gave up all the physical comfort just to be mentally tough. And the next thing I know, at the base camp, I get a message from the bank.
zero balance. And 3 days later, I was on the summit. I had summited to 12,500 feet above sea level, looking at the sunrise and promising myself, once I'm back down, I'll change my life for good. I did that. I got back with a renewed sense for life. I also traveled to Masai Mara with some of my closest friends. That in itself was again a very, very, very beautiful experience of sorts. क्या ही बताओ, shaping the animals was was just something. It was like I can't even explain that excitement. Almost a bhagne wali excitement, just chasing all these animals one after the other, clicking pictures and living that life. Learning so much about Masai Mara, learning so much about the tribe, the people, the stories, all so inspiring. I mean, we were super lucky to have seen the lion killed. There were some of the pictures that even National Geographic ended up liking. Rare sightings like cheetahs, the elephants attacking us. I think kuch nahi jhoota, we experienced it all. So when I wanted to return, I wanted to bring back these stories. The kind of people I met, the colors I saw, the person who was guarding our tribe, James. So much to learn, so much to bring back. I wanted to infuse my work with all these stories. Started with jewelry photography and what I could do with it, the way I could experiment, it just went to another level altogether. The time spent on it, what I wanted to bring to life, each detail of it was something. These colors were beginning to enchant me and they took over my life. Gradually, I was getting better. I started teaching better. I was taking more and more rendering classes and I was having students from all over the world. Speaking of which, my next class happens to be on 8th June. Yeah. So if anyone you know would like to join, please let them know. But apart from that, designing picked up. I started taking projects that was way beyond my capacity. One after the other, I was completing old forgotten commitments. I was getting back to it like never before. So all in all, I think it was a win-win situation. And by the end of it, by the time I took up the last project in November, it was so crazy. This project, unfortunately, I cannot show you and sharing pictures of it because it has started to enter the Guinness Book of Records. But it was for a life-size statue. And I really love the fact that the statue मेरे height का था, so I could just design all over my body. But this project was so intense. The last day कुछ ऐसा था. I submitted it on the wheelchair. But that too happened. And by the time that happened, I got a call from my trainer saying, Builder, you are going to be competing. But injury overseas. That was my fourth ligament tear. I had 3 months to go for this competition and more than 3 months to recover. It was really, really, really painful. But I pushed through. I really wanted to go through with it. And I got a gold in district. District happened, state happened. Just a second. Uncle, would you be able to play the district video? Yeah. So this was just something like I never thought I would be competing, and finally when I got a green signal, I was enjoyed, but I could do it, and the fact that I could push past with the help of my trainer was very empowering. Post which I was preparing for state already. But you see, while I was leveling up in my game, I think life was catching up too. While I was competing, I couldn't see the finish line. It was a blur. There was something happening there. See, between every lift, I was coming back and house hunting. रोना रोक के खुद को सिखाया, one battle at a time. I fought through, got my silver in state, I was back, and in 2 days, I was out of my house.
I was in the new house that I was looking for. But उस दौरान ड्यू टू दैट सिल्वर मैंने अपनी जगह नेशनल्स में बना ली competitor list में. But that whole overnight life turning feeling again, another bout of depression, anxiety, and panic attacks. अकेलापन खाए जा रहा था. I had moved out. I had refused all help from family and friends क्योंकि अगर वापस से had I resorted to all the help, फिर से कंफर्ट जोन में चली जाती. उन चार दीवारों को घर कैसे बनाते हैं समझने लगी थी. इस ट्रांजिशन को वैसे ही इमोशनली झेलना it was impossible. स्ट्रेस ईटिंग बढ़ गया. And the joke is, I was only eating healthy food. ऐसे नहीं है कि junk खा के बढ़ गया. There was no treat involved. I was just really focused on my national game. But you see, one good thing that happened was I did not resort to medication this time. I fell back on my training. I fell back on my habits I had developed in the last 3 years. Just to be able to sustain and survive. Depression यहाँ था तो aim था कि बस ऊपर रहे. Not at that level at all. While I was falling apart spiritually, mentally, physically, in every way once more, happened, Sparky passed away. That was really, I can't even explain that feeling. मानो जान चली गई. This happened before nationals, one day before leaving for nationals. ये तो चल ही रहा था, but you see, apart from that, I was fighting other things where just 1.5 days before nationals, I was 3 kgs, 1.5 kgs overweight, 3 days before nationals. One day before heading there, I was 500 grams overweight. 3 a.m., it was 350 grams. And on the day of the weigh-in, I was 220 grams overweight. That happened. I jogged it off in my Kolhapuri chappals. I was like, clear to karna hai. Got through. I went backstage for warming up. A 45 kg plate comes flying on my toes, smashes my toes, and I am like gone, completely gone. A friend comes and presses my toe to help me out, and she thinks she's helping. Maybe to jaan hi nikal gayi. I was like, uske baad I have to lift and I have to get past this. There is no looking back. Right after that, in my squat, I got a bronze. I got a silver in a bench, and right before my deads, a 7-footer ended up stepping on my foot again. Anyhow, I finished 4th in nationals and Maharashtra circles. So all in all, this journey has been very exhilarating, and I'd like to wrap up by saying one life. You owe yourself every fighting chance. You deserve it. You have to thrive, not just survive. Life is special. Dare to make the choices, live the experience. Life is unique. Don't fear the change or the journey. Love it. Embrace it. Find your thoughts, connect them. It is one continuous life. Empowerment lies in owning your story. Share it. Because all of us have a unique story to share. Every moment you're bringing a story. There's so much. I mean, could I just end with an anecdote if I could? Please. It's a starfish story. One time, there was a girl throwing starfish into the ocean. एक आदमी उसको देखता है, पूछता है क्या कर रहे हैं? She was like, एक को तो बचा लो. ऐसे करके एक बचा ही लगी. You see, every dot connects. You keep building consistently every single day, every single time. Thank you. Great. I think we all have goosebumps, Tanvi, and it was wonderful. Get it as a complete capsule end to end, right from what you experience and what you went through. It's amazing. I would not call it a story, but it's a real life expression. I would like to go back and a little bit ask you about, where you challenged, and I remember you talking about that rope example where you showed it when you were challenged. So does that moment come
Like the example of Something like can you narrate that to us? What happened? Just develop that mindset to just take up a challenge when it comes. No? 3, 2, 1, just go. So कैसे हुआ वो कैसे हुआ the role. एक लड़का आके बोल दिया लड़की से नहीं होता हाँ फिर तो क्या ही था मतलब पुल-अप जो 3 नहीं जाते थे 7 times climb करके I just touched the ceiling came back down 7 like times. just like yeah and I just told him I'm like sorry next time don't say girls can't do it say a beginner cannot do it you know Wow. so फिर छोटे-छोटे moments like that a string of challenges. Right. And you know, where have you got this strength? Do you think जैसे बोलते हैं कि it has made you more fortunate by giving all these challenges? So you feel like a gratitude towards a God Absolutely. to be special? Absolutely. Unfortunately, for most of us, it takes us to go through these deep, dark periods of life to be able to be so grateful and to really see life differently. So, ऐसा ही कुछ हुआ. I don't think I would have seen it differently, or I don't think I would have chosen what I'm doing now, or experiencing now, learning now, if had I not gone through that. So it definitely is the case. At least for me. तो what तन्वी क्या बात कर रही है कि जो नहीं होना था वो हुआ, but वो होने के कारण अभी she is thinking that she is more fortunate. है ना? Tell me more about that project. वो project क्या हुआ जब मिरर में कुछ किया आपने? For days together, हाथ पे कुछ था, पाँव पे कुछ था. हिंदी में बोलो. हाँ बिल्कुल. एक्सपीरियंस ही कुछ क्रेजी था. प्रोजेक्ट ले तो लिया था 7 years बाद मैंने हाँ तो बोल दिया प्रोजेक्ट के लिए. But client asked कि आप कितने टाइम में दोगे? I said आपको कितने टाइम में चाहिए? He said 1 year. I said नहीं 1 month. But are you sure? I said whatever it takes मैं करूँगी. So I started. वो मूर्ति लाइफ साइज मेरे साइज की थी. So I started drawing all over my body. मिरर मंगवाया 6 फीट का. रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया. जब लगा कि वो स्पेस भी कम पड़ रहा है, I checked into a hotel. Papa did not know for a week I was on a staycation. Actually, I would just come meet him during meal times, get to my training and just leave. After a week, I told him, it will be for a month, I will be there. He came on the last day, took pictures of the place and made a video out of it. And now he's so thrilled. Yeah, all of them are very proud of that. But yeah. जब आप कुछ बनाते हो, you create it in layers, in ways that you create it big, छोटा-छोटा बना के हर दिन कुछ तो बनाते. So how can you build that patience of building that? कैसे बनाते हो आप? I just think the fact that basic practice, those kind of push through with that practice. Silently, patiently, when no one's watching, maybe getting up at 5 a.m. is, I don't know, but yes, I've had to change my lifestyle and push through with it. One day at a time. बढ़िया. तो अभी मुझे चाहिए कि आप बताओ कुछ 5 चीजें कि हमने करनी चाहिए. There are young people also around. We are definitely young at heart. Absolutely. Absolutely. But many youngsters are there. What you will tell them to do, not to? I would say live your life to the fullest. I mean, stop stopping yourself. Don't stereotype yourself. कुछ नया बनाओ. कुछ नया सोचो. हटके सोचिए. And basically, we cannot blame society for stereotyping. I think that responsibility is at our individual level to break our own thought process. We should work towards doing that. कुछ हटके hobbies लेनी चाहिए. Keep learning, keep growing, and just keep progressing. कुछ नया आते जाएगा, सोचते जाएगा, करते जाएगा. But ये तो बहुत दूर की चीज है. आप ड्राइंग भी बनाती हो, जंप भी करती हो, maybe climb up the ropes also है. Now you might be thinking something different. वो अभी नया क्या है दिमाग में? So अभी I just started resume किया rather studying Italian and I'm studying nutrition because I got वो एक foundation था मेरे लिए समझने के लिए and so I'm building on that and I think I would like to pursue international collaborations in jewelry as well as fitness in local. Oh, so ऐसा maybe it is like
आप छोटे छोटे होते जा रहे हो, मे बी इन लुकिंग, बट आपका दिमाग बहुत बड़ा हो रहा है. Is it something like Thank you. I would just say that as a compliment. Okay, good. I think it was अच्छी रूबरू हो गई है. I think it is a time कि we will take some questions. Uh, we can make you unmute and she is there. She is all yours. आपको कुछ question पूछना हो, please go ahead and ask her and let's make the best of the time we have. Chat's coming in. People will unmute and ask you. So Tanvi, Abhay got it here. So it's really an inspiring story. Like really looking at the pictures and looking at your achievement, it's really incredible. Like so unbelievable, I would say. Like from where you have started and where you have reached right now. So really appreciate it. Just one thing. What is one thing that you say to yourself to push? Like if you want to do something, like what is the one thing that keeps you motivating or keeps on help you doing certain things? I'll be honest, I can be very indisciplined. So to keep myself disciplined and push through, I make a list, I read it in the morning, I read it at night before sleeping. ताकि उठ के वो फर्स्ट चीज करूं. वरना ये माइंड को आदत लगाना is the toughest thing, toughest I would say. So that's probably these छोटी practices that I do helps you get forward and अभी मुझे कब पे काफी सीखना है इस चीज में. सर मुझे एक पॉइंट है. तन्वी, आपने वो जो डिजाइन किया ना 5 फीट का, वो एक बार सबको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करो ना, क्या किया आपने सबके बॉडी के ऊपर पेंट करके, कुछ तो ऐसा कुछ किया था शायद. तो आई थिंक वो सबको कुछ समझा नहीं, हो सबको समझा क्या वो तन्वी ने बताया था कि कुछ बॉडी के ऊपर पेंटिंग करके कुछ. तो दैट स्टोरी आई शुड आस्क हर टू रिपीट इन हिंदी. तो ऐसा था, मूर्ति जैसा. मूर्ति गणपत में मंदिर में जो मूर्ति है गोपीनाथ जी की 5 फुट की मूर्ति है. वो मूर्ति के कोई डायमेंशंस नहीं होते, बट यही था एक गाइडिंग फैक्टर कि लकली मेरा हाइट मैच हो रहा था. तो यही डिसाइड किया कि करूँ तो डिजाइन कैसे करूँ, लाइफ साइज. आई स्टार्टेड अटैचिंग पेपर बाय पेपर फ्लोर पे. फिर बाद में कट आउट 6 फीट का ग्लास एंड फिर उसको टेबल बना के 6 फीट का मिरर बना के सब किया, बट नथिंग वाज हेल्पिंग. सो मुझे अपने बॉडी पे ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ा. सो दरवाजा बंद करके डे एंड नाइट आई वाज जस्ट एट इट, पूरा टाइम ड्राइंग एंड दैट्स हाउ माय रफ वर्क वाज एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू ट्रांसलेट इट पेपर पे. तो और भी कुछ हुआ था शायद आपको, तो भी घर से भाग के कुछ होटल के रूम में आपने वो किया, क्या हुआ था? For a month's time you were in a room and all that something. तो उसी दौरान what happened was मैंने रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया था. It was like one of those typical CEO वाला स्टोरी, जो टेबल पे काम करके उसी रूम में सोते हैं ऑफिस में करते थे, बस वैसा वाला चीज सेटअप कर दिया था. एंड धीरे धीरे समझा जैसे ही स्पेलिंग ऑल द वर्क की वो स्पेस काफी नहीं है, अब तो एक होटल रूम में ही चेक इन करना पड़ेगा. बट ऐसा हो गया था कि कन्विंस करने के लिए टाइम नहीं था. तो आई जस्ट हैड टू मेक माय मूव्स, चेक इन एंड देन कम बैक होम एंड टेल मम्मा. और उसके बाद एक हफ्ते बाद पापा को बताया, सॉरी पापा, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड मुझे ये करना जरूरी है, आप लास्ट डे पे आके देख लीजिए. वो जो दिवाली का कुछ whenever you are on डाइट चल रहा था, बहुत सिक था, तो शंकर पर चकली सब चीजें घर में होता है, तो हाउ कैसे होता था? डिफिकल्ट. आई थिंक हर एक चैलेंज इज इफेक्टिवली माइंड का चैलेंज, माइंड गेम, बी इट योर डाइट, बी इट योर प्रोजेक्ट या एनीथिंग यू टेक अप. तो चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत कर ली, तो ये भी चैलेंज एक्सेप्टेड. बट ये दिस वाज क्रेजी, इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फेज ऑफ द डाइट. तो जैसे ही मैं रूम से निकलती थी, आई सो अनाउंस आउट ऑफ माय वे, यू नो, जस्ट ईट माय थिंग एंड गो बैक टू द रूम. लाइक कुछ बाकी का सुनना भी नहीं है, नॉट एट ऑल, जस्ट ट्राई दैट वे. या ग्रेट. अभी K11 न्यूट्रिशन, व्हाट ऑल यू आर लर्निंग, उसमें क्या है? So this course is about high performance nutrition. So I will be learning
कि life enhancing diets कैसे डिजाइन करते हैं. I'll be studying all of that. So it should be applicable to everyone from 18 plus onwards to adults to everyone who's fit and wants to be more physically and mentally fit. You know, I'd like to help with people. I'd like to help people with their transformation. वंडरफुल. एक चीज थी, कुछ बाउल्स में पानी डाल के कुछ आवाज करके, देयर वाज सम थेरेपी एंड क्या फंडा है? So ऐसा था कि I was trying out every therapy possible, every nuska possible to just heal or overcome things. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस रहे. साउंड हीलिंग थेरेपी. अब तो उसमें बहुत सारे टाइप्स है. There's a hand pan there and Tibetan bowls and everything. Gong bath hai and all of that. So it was very transcendental. So I started going for these sessions and वो body पे bowls रखते हैं, side में रखते हैं, and depending on what therapy you're going for, they play around with it and it's very soothing. I would recommend everyone to try actually. And maybe a final question from me. You have some view about therapy. क्या थेरेपी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए इस सिचुएशन में, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? So I will not. मैं कोई एक थेरेपी के बारे में मतलब एक थेरेपी प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी या फिर just because I tried medicine, I would not say you go with it. I would say to each his own. अगर ठीक लगे, make an informed decision and go for it. Go for it and come out stronger. Bounce back stronger. Like use this as a launch pad and transform your life there. बढ़िया. And one echo like that. Yeah. मैंने देखा वीडियोस like there was some of kickboxing and all that. वो कब कैसे माइंड में आया और kickboxing करना कैसे चालू किया? So I would call it 2022 का हिंदी. हाँ 20 तो 2022 का ये recent phase रहा है. एक और चीज I wanted to learn. Okay. कुछ नया. तो kickboxing, MMA के बारे में काफी सुना था, but जब चांस मिला, I said why not? तो फिर schedule में बराबर वो भी fit in कर लिया. So work before that, work after that, yeah, chill after that. लेकिन वो एक session right. Any questions from the members who are attending? like किसी और को कुछ questions है? Lot of best wishes for you in the chat box. Multi-talented Tanvi. You're a brave girl. A lot of courage to open up. All this is for you. This is Ravindra. हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते. मैं थॉट आ रहा था कि इतनी ब्रेव गर्ल है और ये इनकी इंस्पिरेशन है, तो why not to take an interview of her at HATKE interview? Are you something like this? वो होना ही है शेड्यूल रहेगा. ये तो हो जाएगा. हटके तो see all these dimensions of I will summarize it maybe at the end, but is indeed something unique, differentiated, out of the box. अलग से. Before that, PK Mehta is there. Yeah. Mehta sir, आप unmute करो. You were there when we given a thought of this session like that, and you are the pillar. आपने वो पार्टी अरेंज की थी और वहाँ पे तन्वी आई थी और एकदम जस्ट मैंने कहा तन्वी यू कम एंड उस समय बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया और ये सब बात हो गई. यस योगेश, तन्वी का एक अचीवमेंट और योगेश तेरा इसको सपोर्ट रियली इज अ बिग थिंग. और तन्वी रियली यू हैव डन, तुमने जो बताया ना अपनी लाइफ के बारे में और ब्यूटीफुली, आई से दिस इज रियली सब लोगों को बहुत इससे मिलेगा कि कि हाँ कि हमें कुछ ना कुछ कभी भी कोई भी ऐसी मुसीबत आए हमें उससे निकलना है और वी कैन डू बस दैट इज द थिंग. गुड. Thank you so much, Ankit. Going back to that night, I really thank all of you. This has been a great opportunity. Well, with your permission. So, going through all this, looking back, do you feel that sense of kind of gratitude has increased? बहुत बड़ा हो गया है कि दूसरे को देना है, खुद को नया बनाना है. कैसे लग रहा है? I mean, how do you feel? Like you said, the sense of gratitude मतलब multifold है. कभी explain नहीं कर पाऊँ कि इससे छोटी छोटी चीजों के लिए जो appreciation build हुआ है. I think that was a building block of everything. So
I live by that. Every morning I practice gratitude and I live by it. And I will continue doing that and I will get everyone to do it. पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलना बिफोर आई यूज करें? I just want to thank them. Like, I will never be able to thank them enough. It's like that. Wonderful. हाँ जी, तपड़िया जी आप, it's over to you. Papa is asking me a question. He's going to make some. मुझे एक चीज याद है कि तन्वी जब दवाई एंटी डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी तो उसके रैपर से भी संभाल के रख रही थी, वो क्या चीज था? Rappers. तो ऐसा है, वो medications is quite a fight. आप जब बंद भी कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, वो एक अलग जर्नी है. आप जब बंद करते हो तो अलग जर्नी है. और मुझे एक माइलस्टोन बनाना था, उसका विजुअल माइलस्टोन. तो what I did was एक ट्रांसपेरेंट बैग लेके I started collecting all the wrappers. Before I knew it, वो बैग बहुत बड़ा पोटे के साइज का हो गया था. So it was a reminder that is what I've eaten, basically. So एक joke as well as a fact कि वो रैपर का बैग सामने था and भगवान का फ्रेम पीछे, तो वो उठ के दोनों का हाथ छोड़ दी. This is like transformation for sure. बढ़िया. Now I think there are last two three. Sumita Abhiji wants to ask a question. उसके बाद उसके भाई भी बोलने का चाहेंगे. And the last one I'll choose who will speak. ये दोनों के बाद. Yeah. Okay. Hi Tanvi, this is Sumita here. And first of all, I would like to congratulate you for taking so many efforts and coming up to this level. Really proud of you. I have many questions, but I'll ask maybe a few of them. First of all, is that when you are alone, okay, how do you do the self-talk? Because that's the most dangerous period of dealing with your mind. That is first question. And second question is, I would like to even thank your parents, the way they have supported. So what should be the parents' role when somebody is going through some of the other challenges in life? Absolutely. Thank you. Thank you for the question. Actually, By the way, this question is from the mother of someone's daughter. She is a teenager, so she is very keen about this question. Right. Self-talk. So, about self-talk, I would say, you have to make a list, conscious list, कि आपको क्या आपके माइंड को कैसे ट्रेन करना है, क्या बताना है आपके माइंड को. And every single day, I think early morning is super effective. ये मैं खुद भी नहीं करती थी till I decided कि मुझे ये change करना है. Because चाहे सालों से I was trying my best to change myself, वो हो नहीं रहा था. So early morning self-talk. And the self-talk before sleeping. पर आप क्या आपकी लिस्ट है? That is important. What you want to achieve, what you want to do, वो बना के आप कीजिए. And then I think slowly, steadily, you will start seeing that shift in your thought process. It will not happen overnight. It will take a couple of days, but it will happen. Because throughout the day, when you're lonely, things do creep in. So it's a habit. It's a habit to break that thought process, I believe. And second question. Yeah. Second was about parents' role. The biggest thing I would like to point out is the parents अपनी जगह पे right है. Doesn't matter right or wrong या generally जगह की information हो. But I would say parents, please support kids to go out and seek professional help. Be it psychologists, be it psychiatrists, be it any other therapist, NLP, be it sound therapy, any sort of therapy. Please let the kid go to a therapist because they are trained. They are trained to break that thought process. You as a parent can only sympathize. आपको वो technically वो चीज आप वो नहीं कर सकते जो professional is trained to do. So please do that, I would say. Yeah, thanks, Tanvi. Just a suggestion. I am looking forward for a book coming from you. So already this was already discussed 2 days before, 3 days before कि तन्वी का बुक आना चाहिए. Now last two, the one is Sunil Mundra, फिर उसको मैं के ऊपर ऐड करेंगे. Last two. Sorry for the time. Yes, Sunil ji, please. Tanvi,
बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया तुम्हारी स्टोरी। और ये एक सभी के लिए इंस्पायरेशन रहेगी। काफी लोग जो इसमें से गुजर रहे हैं, मतलब काफी बच्चे, वो लड़के हैं लड़कियां हैं, जो जिनके लिए भी ये एक पाथ रहेगा कि कैसे इसमें से रिकवर हो सकते हैं। तुम कुछ सेशंस भी ले सकती हो इन बच्चों के लिए, या ऐसे कुछ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। All the best. Ubaji, this was the only thought Tanvi को push करके सेशन कराने कि Tanvi will go ahead taking sessions throughout, ब्लॉग्स करेगी, यूट्यूब करेगी, स्कूल्स में जाएगी, कॉलेजेस में जाएगी और सेशंस लेगी। That was the thought behind that. Yes, buddy. Yeah. Thank you. I will definitely consider. Yes, Uttam bhai. Like Vijay bhai is not there. Yes, Uttam bhai. मेरा लास्ट है क्या? हाँ, आपके बाद जो लास्ट है वो मैं चूज करूंगा आपके बाद। सबसे पहले तो कंप्लेंट के साथ में धन्यवाद पीके को। मैं तो कंप्लेंट करता हूँ कि शादी की सालगिरह में सिर्फ 2-3 लोगों को बुलाया पीके ने, और धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि कम से कम एक अच्छी स्टोरी नहीं लेकिन एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीच को आज एक जन्म मिला। उसके बाद में धन्यवाद योगेश तेरा। अदरवाइज हम भी तन्वी से मिले, तन्वी की इतनी सारी जानकारी तो हकीकत में नहीं थी। तन्वी को जानता जरूर था क्योंकि उसके पहले उसके पापा के शादी की सालगिरह में उन्होंने मुझे बुलाया था, तन्वी वहां मुझे मिली थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये तन्वी है। लेकिन इस तरह की तन्वी है ये मालूम था, लेकिन इतनी वर्सिटाइल, इतनी मल्टी टैलेंटेड तन्वी है ये नहीं जाना था, ये आज जाना है। तो योगेश ये चीज को पकड़ के आज कम से कम इतने लोगों क्लब के बीच में लाना, इसलिए तेरे लिए भी धन्यवाद। आज सही मायने में मैं चंद्रशेखर भाई को और अर्चना भाभी को भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हकीकत में सर माँ बाप का सपोर्ट होता है ना, तब बेटियां या बच्चे इतने आगे तक जाते हैं। तन्वी ये लाइफ की स्टोरी जो थी ना, ये कोई काफी बच्चियों को देखता हूं मैं समाज में, काफी बच्चों के प्रॉब्लम्स में भी हम जाके आए हैं, लेकिन उसमें से उभरना, उसमें पेरेंट्स का साथ मिलना, दो चीज होती है। देखो तुम्हारे पास बहुत सारे टैलेंट, तुम्हारी बहुत सारी उपज है, लेकिन घर का अगर सपोर्ट नहीं होता है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर वो करने के लिए हमको कहीं तक एक ऑब्स्टेकल आता है। पर तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुमको इतना सपोर्ट किया ना, तो आज सही मायने में हम तो आज सुनने के बाद में बोल रहा हूं मैं कि चंद्रशेखर भाई को और अर्चना भाभी को आज रियली ऐसा लगता है कि आज हमको आपको इसलिए सल्यूट करना है कि बच्चों की जिंदगी में अगर अड़चन आ जाती है ना, तो उनको इस तरह से अगर सपोर्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है वो तन्वी ने बताया। अब तन्वी तुझ पे आता हूँ। तूने एक बात बताया कि मैं पेरेंट्स को ऐसे सजेस्ट करूंगी कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें। मैं उल्टा बोलता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि बच्चे तेरी तरह से बने, जिद्दी बने, अपना एक पैशन रखे। माँ बाप क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। माँ बाप बनते ही इसलिए है, जब पेरेंट्स बनोगे ना तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे एक अच्छे पायदान पे जाए। आज मैं भी एक बात समझो, बाप लड़के का बाप हूं, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरी पहचान मेरे बेटे से बने। कल अगर मैं मार्केट से निकलूं तो मुझे लोग बोले कि गौरव के पिताजी जा रहे हैं, तब मेरा फख्र से सीना चौड़ा होगा। कल अगर वहां पे अगर तू गुजरे और चंद्रशेखर भाई साहब गुजरे तो बोले तन्वी के पप्पा जा रहे, तब सीना चौड़ा होगा। पर बच्चे तेरे जैसे चाहिए ना बेटा। तूने एक जिद रखी, हर चीज का पैशन रखा, और इसके लिए पागल होना पड़ता है। पागल किसी भी स्टेज तक जाने के लिए पागल होना पड़ता है। दुनिया उस वक्त पागल जरूर बोलती है, लेकिन जब अचीव करते हैं ना तब पागल नहीं, तब वो एक रिजल्ट बनता है। आज बहुत अच्छा लगा सुन के तेरे को, रियल में बोलता हूँ, प्राउड फीलिंग भी हुआ कि आज हमारी भी एक बेटी आज इस तरह से कर सकती है। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, सुनते सुनते और बोलते बोलते भी इमोशनल हो सकता हूँ, लेकिन यही चाहूंगा कि तेरे साथ में फिर से मुझे एक बार बैठना है। मैं आज तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, या आज तू भी पूरी तरह से बोल नहीं पाई, लेकिन ये हकीकत है। ये जिसे अभी किसी ने बताया कि तेरी एक बुक बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, और ये बुक लोगों के सामने जानी चाहिए। अगर बुक ना जाए तो कम से कम ऐसे बच्चों का एक अलग से क्लासेस हो,
कि जो भी बच्चे जिंदगी में कहीं पर कुछ अड़चन में आ गए हो और उनको फिर से अपनी जिंदगी को शुरुआत करनी है और एक मकाम तक ले जाना है ना, तो बेटा तू ये जरूर काम करना। और उसमें हमारे लायंस क्लब की तरफ से, मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट लगेगा और कभी भी लगेगा, वी ऑल आर विद यू। मैं भी तेरे साथ में हूँ, तेरे पेरेंट्स भी तेरे साथ में है। चंद्रशेखर भाई के पास से मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए योगेश भाई चंद्रशेखर भाई के पास से लो कि ये जर्नी जब कर रही थी तो इनके दिल में भी कुछ तो देखो, हर माँ बाप के पास जब अपने बच्चों में कुछ कोई काल ऐसे आ जाता है तो वो कितना रिवर्स में होते हैं, और जब वो वापस आगे जाना चाहते हैं तो वो हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं तो हिम्मत नहीं आती है। हर चीज को क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो चंद्रशेखर भाई ने क्या क्या किया या उन्होंने उस वक्त क्या सोच रखी, आज हमको ये एक्चुअली चंद्रशेखर भाई के पास से जानने के लिए, हम हमारी जैसी उम्र के जिनके बच्चे आज तन्वी से भी, हमारे बच्चे तन्वी से भी आज उम्र में शायद बड़े, लेकिन अगर इस तरह से कोई पोजीशन आ जाती है तो चंद्रशेखर भाई और अर्चना भाभी अगर आप साथ में हो ना, तो कम से कम आप भी पेरेंट्स को इस तरह से बोलो कि हमारे पास भी ये आया था लेकिन हमने अपने आप की अपनी सोच को इस तरह से बदली किया तो ये हम कर पाए। तो मैं चाहता हूँ योगेश, चंद्रशेखर भाई को और अर्चना भाभी को, इनको एक बार सामने लाओ। और उसके पहले तन्वी, रियली बेटा आज ऐसे प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हमारे बीच हमारी एक बेटी भी इतनी प्राउडी है। आज तेरे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो खुशी हो रही है। और बस इतना ही बोलूंगा कि भगवान तुझे वो सब कुछ दे जो तू चाहे। Thank you so much, Uncle. Seriously. थैंक यू उत्तम भाई। एक्चुअली जो लास्ट पर्सन था ना, वो था अर्चना भाभी। वाई अर्चना भाभी तापड़े जी के पहले, कि जिस दिन हम लोगों ने होटल पे डिसाइड किया था कि सेशन करना है, तो मैंने तापड़े जी और अर्चना भाभी को बोला कि आप तन्वी को एक वर्ड नहीं बोलोगे, और तन्वी को बोला था कि यू विल नॉट टेक एनी ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 10-12 दिन पहले की बात है। आई थिंक ये 12 दिन के अंदर तन्वी ने दोनों से कुछ बात नहीं किया और ये दोनों ने तन्वी से बात नहीं की। अभी जब ये सेशन चालू हो रहा था 9 बजे अर्चना भाभी का फोन आया और अर्चना भाभी ने बोला, योगेश आई हैव केप्ट माय वर्ड्स, कि मैंने अभी तक तन्वी से इस बारे में कोई भी टॉपिक पे बात नहीं की, तो इसलिए आप अर्चना भाभी से सुनना है। यस अर्चना भाभी, अगर ये नहीं सुना है तो तन्वी को भी सुनने में इंटरेस्ट आएगा कि मेरी मम्मी अभी मेरे लिए क्या बोलेगी या वो क्या बोलने चाहिए। यस 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 प्लीज। ये थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूँ कि जब बच्चे दुखी होते हैं ना तो माँ बाप ज्यादा दुखी होते हैं। यानी जब बच्चे प्रॉब्लम में थे तो हम लोग रात को सो नहीं पाते थे, और जब वो चाहते थे कि ये करूं तो हम लोग बोलते थे ठीक है कर ले बेटा, क्योंकि वो उसको उसमें से बाहर निकलना ये हमारी प्रायोरिटी थी। हम लोग उसकी टेंशन में हमेशा रहते थे कि क्या करे क्या नहीं करे। वो बोलती मैं जाऊंगी, अब मसाई मारा, जाओ तुम जाना चाहिए, ये करना चाहिए। जिस तरह से वो बाहर निकल सकती है हम लोग कोशिश करते थे कि वो बाहर निकले करके, और हमारी वो कोशिश रंग लाई और एक्चुअल में उसमें से बाहर निकल गई वो। और वो हमें बहुत अच्छा लगा कि उसने वो मन पे लिया और उसने भी किया। और वो भी उतनी गट्स वाली लड़की है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि जब वो ठान लेती कुछ करना है तो वो करके दिखाती है, और उसके कारण वो भी आगे बढ़ी और वो कुछ कर पाई। और इसीलिए आज मैं बोलता हूँ, पूरा मुझे बोलता हूँ कि मैं आई एम प्राउड दैट तन्वी इज माय डॉटर। तेजस और तन्वी मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और जिनके लिए मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा और जिंदगी भर हैप्पी रहूंगा। Thank you. We are proud that Tanvi is our Ganeshkhind family member है। जी हम लोग प्राउड है सर कि तन्वी इज फ्रॉम आवर Ganeshkhind family member, ऐसा है सर। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि वो पीके के साथ में हमारी एक डिस्कशन क्या हुआ उस दिन, अपनी बात क्या हुई और उस बात में से ये नई चीज जन्म ली। और बाद में योगेश भाई और शिरीष भाई ने पूरा उसको उठा के इतनी खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट किया, और ताकि और उसको सर ये सिर्फ थैंक्स, ये बात करते हैं सर हम लोग जरिया है, लेकिन जब तन्वी से 5-6 दिन बात की और तन्वी का जो मैसेज आया ना कि नहीं अंकल मुझे ये करना है, तो दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे बढ़िया बात थी कि तन्वी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये सेशन करना है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मोटिवेशन आप लोगों से मिला और मिलने के बाद में वो सचमुच
हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा क्षण है ये कि आज तन्वी सबके सामने बैठ के सभी हर चीज जिंदगी डिलीवर कर सकी। मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, एक्चुअली उसने बहुत कंसाइज करने की कोशिश की है। उसके इवेंट्स हम लोग इतने बताएंगे तो काफी चीजें। एक छोटा सा इवेंट बताता हूँ कि वो जब डिजाइनिंग करती थी तो हमारे कस्टमर्स भी बहुत खुश होते थे। एक दिन एक कस्टमर ने पूरा बिलिंग हुआ, उसके बाद में चेकबुक निकाला, पेमेंट हो गया, उसके बाद में चेकबुक निकाला और बोले मैं तन्वी को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो हमें लगा ठीक है कोई 1,000-1,100 लिखा है, उसने 25,000 का चेक लिखा और बोला केवल तन्वी को मैं देता हूँ कि तन्वी जैसे डिजाइनर में आज तक पहले कभी मिला नहीं करके। वो हमारे एक प्राउड मोमेंट था। एक ही बोलता हूँ, एक फिर से लास्ट ये में आज से 15 साल पहले की बात है। ये जो उसको चेक दिया गया वो आज से 15 साल पहले की बात है। भाभी जी आपसे क्वेश्चन, और नेशनल जब जीती थी वो मोमेंट क्या था, वो टाइम पे क्या क्या चल रहा था? आप ही थे वहां पे सामने उसके? Mama was my lucky mascot. उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअल में नेशनल्स का स्टार्ट हो रहा था, इनका वेट लेना चल रहा था और उसका पहले दिन कुछ ½ kg वेट ज्यादा हो रहा था। तो पूरा दिन उसने बिना खाए पिए बिना पानी पिए निकाला और दूसरा दिन अभी वेट लेने का टाइम आ गया तो 250 ग्राम ज्यादा था। अब उसके पास जब उनके शूज अलग होते हैं, स्पोर्ट्स शूज नहीं होते, तो वो शूज से वो कोई ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते इनके पावर लिफ्टिंग के शूज से। तो उसके पाँव में कोल्हापुरी चप्पल थी, उसी से उसने 20 से 25 मिनट तक के जॉगिंग किया और कट टू कट उसका 47 kg वेट आ गया उस स्केल पे। बहुत बढ़िया ने उसमें से वो, और जैसे उसका बेंच प्रेस का टाइम आया और ये लोग वार्म अप कर रहे थे और आसपास में सभी लोग बाकी लोग भी कर रहे थे और गलती से एक लड़की के हाथ से एक 45 kg का प्लेट उसकी टो पे गिर गया, पाँव पे गलती से गिर गया। कंपटीशन के जस्ट 10 मिनट पहले की बात है। सब लोग इकट्ठा हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तन्वी बोली नहीं मैं जा रही हूँ, मैं उठाऊंगी। वो गई, उसने उठा लिया और उसमें उसको सिल्वर उसके मेडल बीच में एक मिला। और हुआ था कुछ, उसके बाद में लाइन में खड़ी थी और क्या हुआ फिर? वो लाइन में खड़ी थी अंदर जाने के लिए और कोई लड़की के ट्रेनर का पाँव उसी पाँव के ऊपर गिर गया फिर से। और वो ट्रेनर का वेट कितना था? जो पेन के साथ उसने कंपटीशन खेली है। ट्रेनर का हाइट और वेट कितना था अभी? हाँ वो ट्रेनर का हाइट और वेट कितना था? वो उड़ीसा का कोई ट्रेनर था, 6.5 फीट एंड ऐसे एकदम बॉडी की। उसको यानी 2 जन को पुश करना पड़ा, तन्वी के पाँव से उसका पाँव हटाने के लिए 2 जन को उसको पुश करना पड़ा। उसके ध्यान में भी नहीं आया कि क्या हुआ है पीछे। लिटरली वो मेडल जब जीती ना, अभी एक और पॉइंट, नेशनल पे जाने के पहले घर में कोई इंसिडेंस हुआ था? एक्चुअल में मेरा 3rd बेबी बोल सकते हैं, हमारा पेट, हमारा स्पार्की, वो एक दिन पहले एक्सपायर हो गया और ऐसी सिचुएशन थी कि वो हालत में हम निकलना बहुत डिफिकल्ट था। मैंने लगभग कैंसिल कर दिया था जाना। तन्वी को कैसे समझाना, कौन किसको समझाए, इस मनस्थिति में थे हम लोग। लेकिन तन्वी बोली मम्मा जाना है, स्पार्की के लिए अपने को जाना है। और हम लोग 7th को एक्सपायर हुआ, 8th को हम लोग रवाना हो गए केरला के लिए। Hats off अभी। बस एक वापस एक आशीर्वाद देना रह गया था। आशीर्वाद ये हमारे पूरे गणेशखिंड की तरफ से तन्वी तेरे को देना चाहता हूँ कि तूने वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में जिस तरह से तू नेशनल में गई है ना, उस तरह से ये मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए तू नेशनल लेवल पे जाएगी, ये हमको विश्वास है। और वहां पर तुझको समाज के नहीं, तुझको अच्छे फील्ड के लोग वहां पर तुझको नवाजेंगे, तेरी बहादुरी को नवाजेंगे, तेरे पेरेंट्स को नवाजेंगे। ये पूरी मुझको आज विश्वास आ रहा है जिस तरह से तेरे को देखा। इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं अलग से तुझसे मिलना चाहता हूँ और तेरे को पूरा एक बार समझना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ना कि ये इतने बड़े लाइफ की जर्नी ऐसे 30 मिनट में पूरी नहीं होती है, और उसमें भी वो तेरी इतनी टफ इंग्लिश थी, हमारी तो थोड़ी कम जाती ना, हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे।
तो अभी एक बार घर पे आऊंगा, तापड़िया जी एक बार घर पे बुला हमको खाना खाने के लिए, तो तन्वी के साथ में 2 घंटा बैठेंगे हम। और उसके बाद में अभी जैसे योगेश ने बोला ना, योगेश अभी एक धुन ये बना भाई कि इसको स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे ये कैसे लेके जाए। सर नेशनल लेवल तो पहुंच गई है, नेशनल लेवल पे अवार्ड ले लिया है। ऑलरेडी उसने बताया कि नहीं बताया नहीं, शी हैज क्वालिफाइड फॉर इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। वेट लिफ्टिंग की बात नहीं, आगे का वो अवार्ड बाकी है। एक बात है, तन्वी रेंडरिंग के क्लासेस भी लेती है ना, तो एट ए टाइम सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट का लेती है, बहुत सारे लोगों के साथ फेस नहीं कर सकती है। लेकिन आज योगेश भैया और शैलेश भैया ना, शिरीष भैया, इन्होंने ये चीज कर दिखाई कि इतने लोगों के सामने तन्वी इतना अच्छे से बोल पाई। फर्स्ट टाइम है उसके लाइफ में। बहुत बढ़िया बोली, बहुत बढ़िया बोली। तन्वी तो एकेडमी चालू कर, पार्टनरशिप में आते हो। पहला स्टूडेंट मेरे तरफ से आएगा उसको। Great. So great. So very nice. Thanks to तो क्लैप करो यार। Shirish uncle, mama, papa, Karuna auntie, TK uncle. Seriously, thanks to all of you all. I mean, if it wasn't for this inspiring push, ये नहीं होता था मेरे से, honestly. So at the end, I would like to thank each and every person for joining this session. First of all, a very big thanks to Tanvi for accepting this and for delivering such a wonderful session. जो आज जिन्होंने सबने सुना उस सबको इंस्पायर करेगा, और ये मैं जो बोल रहा हूँ शायद सब लोग एग्री भी करेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी आके अगर कुछ बातें करे ना, तो इससे अच्छा मोटिवेशनल स्पीच कुछ हो नहीं सकता। वो सब सुनी सुनाई बातें बोलते हैं और बहुत सारा रटा वही पुरानी सब बातें बार बार बोलते हैं, और हम लोग हंसते हैं और मोटिवेट होते हैं। बट सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी आई हैव नेवर हर्ड बिफोर, और ये शायद सब लोग, मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग एग्री भी करेंगे। देन थैंक्स टू शिरीष भाई, जो फोटोग्राफ्स वीडियोस आपने जो साथ में देखे, बहुत अच्छे से। 2 दिन पहले शिरीष भाई को बोला कि शिरीष भाई ऐसा है और तन्वी को सपोर्ट करना है, तो विद इन दिस 2 days शिरीष भाई ने 2 घंटे का जूम मीटिंग किया, और कल हम लोगों ने 3 घंटा यहाँ पे बैठ के ऑफिस में बैठ के वो सब कंसेप्चुअलाइज किया। तो तन्वी को उन्होंने पूरा, मतलब शी वाज, कल तक चल रहा था कैसा होगा क्या होगा, बट yesterday within 3 hours she was, हमारा उसका मॉक हो गया। शिरीष भाई ने पूरा वीडियो बनाया, फोटोग्राफ्स को साथ में कंपाइल किया पूरा, दैट मेक द सर्च। वो जोरदार काम शिरीष भाई ने किया। थैंक्स टू शिरीष भाई। मैं बोलूंगा कि इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ, वो बनी ऐसी है कि वो हमको इंस्पायर करती है कि हम भी कुछ करें। तो ये तो बोलते हैं ना कि खारीचा वाटा, मराठीत म्हणतात खारीचा वाटा, छोटा सा ये ब्लेसिंग है। यू शुड एक्चुअली गो टू माइल्स हाइट्स एंड वी शुड सी योर बुक। आपका सब जगह पे ऐसा मोटिवेशनल स्पीच होना चाहिए एंड पीपल शुड फॉलो यू। जरूर करेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स, थैंक यू, बाय, सी यू। थैंक यू सो मच। Thank you. सुना, और सबके सामने अपना जो कहते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग का, तुझे जो डर था वो डर तेरे मन से निकल गया। तो थैंक यू तन्वी फॉर योर। वो था ही नहीं एक्चुअल में ऐसा, वो तो सिर्फ मन, खुद ही मन के मन को बोल रही थी, वो था ही नहीं ऐसा कुछ। कितने many heart attacks आके गए होंगे इसके बीच में। No, Tanvi, good. So much more. All the best for your future. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Bye.